सेंस कि आपको रिविजन कैसे करनी चाहिए, ठीक है. सो एज पर आवर यूजुअल वे ऑफ स्टडिंग थिंग्स, so having a look at the kind of questions that have come in the last 18 to 20 years will give you a fair idea किस तरह से आपको तैयारी करनी चाहिए. So here it is. So ये इंडस्ट्री और इंफ्रास्ट्रक्चर दोनों के कंबाइंड क्वेश्चंस हैं. Okay. So consider the following factors regarding an industry: capital investment, business turnover, labor force, and power consumption. Which of these determine the nature and size of the industry? ये क्वेश्चन जब पहले आया 2001 में, तो हम ज्यादातर हमारा ध्यान होता था कैपिटल इन्वेस्टमेंट के ऊपर. लेकिन अब इसमें से कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं जिसको हम साइज ऑफ इंडस्ट्री में लेंगे या नहीं लेंगे? कैपिटल इन्वेस्टमेंट तो डेफिनेटली आएगा, ये श्योर है, क्योंकि आप अगर ध्यान दें तो एमएसएमई की जो पुराने 2006 एक्ट के अंदर डेफिनेशन होती थी, दैट वाज बेस्ड अपॉन इन्वेस्टमेंट इन प्लांट एंड मशीनरी और कैपिटल इन्वेस्टमेंट. अच्छा, अब इसके अंदर एक और पैरामीटर जोड़ा जाता है आज की डेट में. अगर मैं आज के एमएसएमई की डेफिनेशन जो नहीं आई है उसके हिसाब से चलूं, तो दैट इज बिजनेस टर्नओवर, दैट हैज आल्सो बीन एडेड. लेबर फोर्स, you having more labor force or less labor force is essentially a concept of you being a large industry or not. क्योंकि जब more than 100 labor force है तो आपको large industry में माना जाता है. इसी तरह से अगर आप 20 या उससे ज्यादा लेबर है और पावर कंज्यूमिंग है, सो एंड सो फैक्टर्स हैं, उनके हिसाब से भी आपको लेबर फोर्स का एक क्राइटेरिया आता है, डेफिनेटली आता है. लेकिन ये हमें क्वेश्चन क्या करना है? डिटरमिन द नेचर एंड साइज ऑफ इंडस्ट्री बोथ. सो लेबर फोर्स अगर हम सिंगुलरली देखें तो इट डज नॉट डिटरमिन द नेचर एंड साइज ऑफ इंडस्ट्री. पावर कंजम्पशन डेफिनेटली डज. If there is an industry which is consuming power and there is one that does not consume power, तो उसमें नेचर ऑफ इंडस्ट्री में डेफिनेटली फर्क पड़ता है. आज की डेट में अगर मैं देखूं तो ये सारे फैक्टर्स काम करते हैं. In 2023 all of them should be the part of the answer. 2001 के अंदर हम बस इसमें से बिजनेस टर्नओवर वाला एंगल नहीं डालते. तो इस क्वेश्चन का 2001 की अगर आंसर की कोई भी देखोगे तो आंसर इज दिस 1, 3 एंड 4. आज अगर सेम क्वेश्चन आ जाए 2023 में तो हम बिजनेस टर्नओवर लेनी शुरू कर दी है. दिस स्टार्टेड इन 2019 जब हमने एमएसएमई की डेफिनेशन टर्नओवर के हिसाब से देखनी शुरू की. ठीक है, इज इट अंडरस्टूड? हम पढ़ेंगे भी, डोंट वरी, व्हाटएवर हैपेंड एज फार एज करंट अफेयर्स इन एमएसएमई इज कंसर्न्ड. देन India's software exports increased at an average growth rate of 50% since 1995-96. India's software companies were cost effective and maintained international quality. ये दोनों ठीक हैं, assertion, reason and R is the correct explanation of A 2001 के हिसाब से. ठीक है, 95 से लेके 2001 ये वाले जो ट्रेंड्स हैं ये इकोनॉमिक सर्वे के अंदर आते हैं कि पिछले 5 साल में किसी इंडस्ट्री का क्या हुआ. तो ये उसके बेस पे क्वेश्चन था. With reference to public sector undertakings in India, consider the following statements. MMRTC, that is Mines and Minerals Trading Corporation of India Limited, is the largest non-oil importer of the country. सबसे ज्यादा import MMRTC करता है. Then जैसे lithium ion है, for example, तो lithium ion की बैटरीज बनती हैं तो ये import करेगा. Project and Equipment Corporation of India Limited is under the Ministry of Commerce, not here. इंडस्ट्री के अंदर नहीं है. ठीक है. One of the objectives of Export Credit Guarantee Corporation of India Limited is to enforce quality control and compulsory pre-shipment inspection of various exportable commodities. ये डायरेक्टर जनरल ऑफ एक्सपोर्ट्स का काम है, ये क्रेडिट गारंटी कॉर्पोरेशन का नहीं है. इनका काम सिर्फ इतना सा है कि क्रेडिट मिलना चाहिए किसी को भी जो एक्सपोर्ट में काम कर रहा है. कोई भी एक्सपोर्टर है उसके लिए क्रेडिट गारंटी गवर्नमेंट की तरफ से, जैसे CGFTL बनाया, क्रेडिट गारंटी फंड ट्रस्ट ऑफ इंडिया लिमिटेड, ये एमएसएमईज के लिए क्रेडिट की गारंटी लेता है. नहीं तो उनके लोन के ऊपर कोई गारंटी क्यों लेगा? इट्स लाइक दिस. तो गवर्नमेंट लेती है. ऐसे ही एक्सपोर्टर्स के लिए भी क्रेडिट गारंटी ये ECGCIL प्रोवाइड करता है. ये दोनों स्टेटमेंट्स गलत हैं. आंसर इज वन ओनली. Which of the following commitments
authorities recommend the abolition of reservation of items for small scale industry. So this is Abid Hussain committee. इसको finally अब implement किया गया in 2015. मोदी गवर्नमेंट के आने के बाद, नहीं तो 20-21 आइटम्स अभी भी स्मॉल स्केल इंडस्ट्री के लिए रिजर्व थी, जिसमें से टेक्सटाइल एक पर्टिकुलर आइटम था, जिसकी वजह से टेक्सटाइल सेक्टर में इंडिया एक्सपोर्ट के अंदर काफी पिछड़ गया था. You're not able to compete with the big giants. Why? Because large scale industry could not manufacture textiles. And if they do, they only have to export, they cannot sell in India. That kind of conditions used to be there. We'll come to know क्यों ये conditions लगी, कब लगी. Then this is something that MMTC is the largest international trading organization with India. And Neelanchal Ispat Nigam Limited has been set up by MMTC jointly with the government of Odisha. So these are both fine. ये पहले इस तरह के क्वेश्चन आते थे ऑर्गेनाइजेशन का मात्र. SEZ एक्ट ये इस साल भी बहुत न्यूज में रहा, बिकॉज अगर आप बजट सुना तो बजट में भी ये बोला गया कि गिफ्ट सिटी को SEZ का स्टेटस देंगे, ताकि फॉर ऑल टैक्सेशनल पर्पसेस इट इज आउटसाइड द जुरिसडिक्शन ऑफ द कंट्री. So SEZ Act 2005, which came into effect in February 2006, has certain objectives. क्या है? Development of infrastructure facilities, yes. Promotion of investment from foreign sources, yes. Promotion of exports of goods and services, both है. Services only नहीं है. एक दोनों का करना है. So that's the consideration. तो इस वजह से 1 and 2, 3 should not be the part of the answer. और अगर आप इतना भी कर लो detect, तो देखिए यहाँ पे भी 3 है, यहाँ पे भी 3 है, यहाँ पे भी 3, अपने आप एलिमिनेट भी हो जाता. यूपीएससी के क्वेश्चन आसान होते हैं, अगर वो आपसे ऐसा कुछ पूछेगी भी ना, तो एक ना एक चीज ऐसी जरूर डालेगी. अब यहाँ पे वर्ड जो ओनली है ना, इट इज ऑलवेज अ वॉच वर्ड इन प्रीलिम्स. कभी भी किसी स्टेटमेंट में भी ओनली वर्ड आता है तो उसको 2 बार ध्यान से पढ़ के सोचो कि यार क्या ये सिर्फ है ऐसा या कुछ और भी आ सकता है. तो वहीं से आपको आंसर के लिए बहुत क्यूज मिल जाएंगे. Which of the following brings out the CPI IW, लेबर ब्यूरो, पढ़ा हुआ आपने. And with reference to the National Investment Fund, to which the disinvestment proceeds are routed, consider the following statement. Disinvestment क्या है? Public sector enterprises के जब shares बेचे जाते हैं तो disinvestment करती है गवर्नमेंट, अपनी इन्वेस्टमेंट बाहर निकालती है. तो उसके लिए NIF क्रिएट किया गया था. तो उसके कंटेक्स्ट में क्वेश्चन. The assets of NIF are managed by the Union Ministry of Finance. Let's say आपको मिनिस्ट्री नहीं पता, छोड़ दो इसको एक बार, आगे देखो. NIF is to be maintained within the consolidated fund of India. ये पब्लिक अकाउंट्स ऑफ इंडिया के अंदर है, ना कि कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया के अंदर. ठीक है. देन certain asset management companies are appointed as fund managers. तो हाँ, स्पेशलाइज्ड एसेट मैनेजमेंट कंपनीज हो सकती हैं, लेकिन गवर्नमेंट ही कर रही है ना खुद. नेशनल इन्वेस्टमेंट फंड पे सारी डिसीजन मेकिंग तो गवर्नमेंट को करना है. और जब भी डिसइन्वेस्टमेंट होता है तो उसमें नीति आयोग और गवर्नमेंट के एम्प्लॉइज इन्वॉल्व होते हैं. तो ये भी थोड़ा छोड़ दो एक बार के लिए, आगे आओ. A certain proportion of annual income is used for financing select social sectors. तो annual income of this particular fund जो है ना, उसको यूज किया जा सकता है कहीं पे भी आज की डेट में. लेकिन 2013 के बाद ये पॉलिसी आई थी कि हम इसको कर सकते हैं. उस टाइम पे ये पॉलिसी नहीं था. ठीक है. तो दैट्स व्हाई ये भी स्टेटमेंट गलत है, ये भी गलत है, ये भी गलत है. एक ही स्टेटमेंट ठीक है, ये वाले. Now, Government of India disinvesting its equity in CPSEs क्यों करता है? Why is it done? The government intends to use the revenue earned from disinvestment mainly to pay back external debt. well, बात एक सोच के देखो, ये रेवेन्यू किस में आएगी? रुपीज में. एक्सटर्नल डेट ज्यादा किस में? डॉलर्स में. मोर ओवर ये क्यों निकाला जाता है? इट इज टू डील विद फिस्कल डेफिसिट, नॉट फॉर एक्सटर्नल डेट. ठीक है. और एक्सटर्नल डेट में तो गवर्नमेंट का भी डेट है, प्राइवेट सेक्टर का भी डेट है, सबका डेट है. तो इन एनी केस वहां पे यूज नहीं किया जाता. इसको करना भी होगा तो फिस्कल डेफिसिट को मैनेज करने के लिए यूज किया जाता है. पहली स्टेटमेंट इस वजह से गलत है. गवर्नमेंट नो लॉन्गर इंटेंड्स टू रिटेन द मैनेजमेंट कंट्रोल ऑफ CPSEs. हाँ, ये लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन के चलते एक पॉलिसी रिस्पॉन्स है. वो नहीं चाहता कि अब गवर्नमेंट ही ये सारी चीजें देखता रहे, प्राइवेट सेक्टर को देखनी चाहिए.
what are the recent policy initiatives of Government of India to promote growth in manufacturing sector? Setting up of National Investment and Manufacturing Zones, ये 2011 में पॉलिसी आया था, तो उसके हिसाब से 2012 के प्रीलिम्स में पूछा गया. Provide the benefit of single window clearance. बेसिकली सारी परमिशन एक जगह मिल जाए जब भी इंडस्ट्री सेटअप करना. तो establishing the technology acquisition and development fund, so for upgrading the technology of public and private sector enterprises. तो ये सारी चीजें ठीक है, all three statements. In India, the overall index of industrial production, the indices of 8 core industries have a combined weightage of 37.9%. अब ये 2017 के अंदर इसको चेंज कर दिया गया था. There was a committee called सौमित्रा चौधरी कमेटी. तो उसकी recommendations के बाद now it is 40.23%. सौमित्रा चौधरी कमेटी. So now it is not 37.9, it is 40.23%. Okay. अब देखिए, which of the following are among those 8 core industries? तो basically ये देखना है कि कौन सा 8 core industries में नहीं है. इनका बड़ा सिंपल सा सिस्टम है. एक है इंफ्रा के लिए और दूसरे हैं एनर्जी के लिए. दो तरह के हैं, इंफ्रा और एनर्जी. इंफ्रा के लिए स्टील और सीमेंट है, बाकी सब एनर्जी रिलेटेड है. तो फर्टिलाइजर छोड़ के, तो सीमेंट, फर्टिलाइजर, नेचुरल गैस, रिफाइनरी प्रोडक्ट्स, ये सारे हैं. टेक्सटाइल्स नहीं. तो 1, 2, 3 and 4. ठीक है. देन फिर से देखो, इंडेक्स ऑफ 8 कोर इंडस्ट्री. अब ये 2012 में क्वेश्चन आया, फिर 2015 में फिर आया. तो विच ऑफ द फॉलोइंग इज गिवन द हाईएस्ट वेटेज? तो फिलहाल हाईएस्ट वेटेज तो पेट्रोलियम के पास है, पेट्रोलियम सेक्टर के ऊपर है ना. प्रोडक्ट्स, नाउ दिस हैज द हाईएस्ट वेटेज आफ्टर 2017. लेकिन 2015 में जब ये क्वेश्चन आया तब हाईएस्ट वेटेज इलेक्ट्रिसिटी के पास थी. ठीक है. सो नाउ इट हैज कम टू द सेकंड हाईएस्ट. अगर 2023 में ऐसा क्वेश्चन दोबारा आता है तो दिस इज नाउ सेकंड हाईएस्ट. ओके. और अब हाईएस्ट किसके पास है? रिफाइनरी प्रोडक्ट्स. लेकिन अगर इनमें से भी चूज करना होता तो भी तो आंसर वही रहता, क्योंकि रिफाइनरी प्रोडक्ट्स दिया ही नहीं. Then, with reference to Quality Council of India, consider the following statement. QCI was set up as a joint initiative by Government of India and the Indian industry. ये ना zero effect, zero defect आपने सुना होगा, Z scheme. तो उसके लिए भी ये काम करते हैं. Chairman of QCI is appointed by Prime Minister on the recommendations of the industry to the government. ये दोनों statements ठीक थी. This was also in news back in the day जब ये question आया तो 2015 में. उन्नत भारत अभियान ये क्या करना चाहता है? कनेक्टिंग इंस्टीट्यूशंस ऑफ हायर एजुकेशन विद लोकल कम्युनिटीज टू एड्रेस डेवलपमेंटल चैलेंजेस थ्रू अप्रोप्रिएट टेक्नोलॉजी, ये करना चाहता है. नेक्स्ट, विद रेफरेंस टू एशिया पैसिफिक मिनिस्टेरियल कॉन्फ्रेंस ऑन हाउसिंग एंड अर्बन डेवलपमेंट, अभी इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर है. कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स. So the first such conference was held in India in 2006 on the theme Emerging Urban Forms, Policy Response and Governance Structure. तो इंडिया में नहीं हुआ था. India hosts all annual ministerial conference in partnership with ADB, APEC and ASEAN. तो वही जो पहली स्टेटमेंट में पूछा है वही दूसरी में पूछा है. भाई हम सारे नहीं करते, जहाँ पे स्टार्ट हुआ वहां पे चल रहा है. दोनों स्टेटमेंट्स गलत थी. अब ये भी करंट अफेयर बेस्ड. फिर से Global Infrastructure Facility, what is this? So it is an World Bank collaboration that facilitates preparation and structuring of complex infrastructure, public-private partnerships to enable mobilization of private sector and institutional investor capital. तो ये न्यूज में था, फिर से करंट अफेयर बेस्ड क्वेश्चन है. कुल मिला के समझने वाली बात यह है कि इसके अंदर करंट अफेयर बेस्ड क्वेश्चन ज्यादा आता है. ठीक है. देन नेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट फंड, अब ये भी नया आया था. एक तो है नेशनल इन्वेस्टमेंट फंड जो पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस की डिसइन्वेस्टमेंट प्रोसीड्स जो होती हैं वो इसमें जाती हैं, और ये एक पब्लिक अकाउंट्स का हिस्सा है. एक है NIIF, ये अलग है. ये क्यों बनाया गया? ये इंफ्रास्ट्रक्चर को बूस्ट देने के लिए बनाया गया. उसमें इन्वेस्टमेंट इंडिया को बहुत रिक्वायर्ड. सो इज इट एन ऑर्गन ऑफ नीति आयोग? नहीं, ये एक सेपरेट फंड है. नीति आयोग का इससे कुछ लेना देना नहीं है. It is a corpus of 4 lakh crore rupees. No, it's a corpus of 40,000 crore rupees. एक जीरो ज्यादा डाल दिया उन्होंने.
तो पहली बार था जब यूपीएससी ने ऐसा बचकाना सा क्वेश्चन डाला कि नहीं 4,40,000 की तुम ध्यान से देखते हो या नहीं देखते हो। ठीक है, तो बजट में इसको जब अनाउंस किया गया था तो इट वाज अ कॉर्पस ऑफ 40,000 करोड़ रुपीस, क्योंकि 4 लाख करोड़ रुपीस तो कैपिटल एक्सपेंडिचर के तौर पे उस टाइम अवेलेबल नहीं था। आज हम सोच रहे हैं कि 10 लाख करोड़ का कैपिटल एक्सपेंडिचर करेंगे, जो प्रेजेंट बजट है उसके अंदर बताया गया। सो दीज आर द काइंड ऑफ क्वेश्चंस दैट हैव कम इन दिस कैटेगरी टिल डेट। क्या समझ आया? ज्यादातर इंडस्ट्री और इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ रिलेटेड क्वेश्चंस जो हैं वो करंट ओरिएंटेड आएंगे, करंट एस्पेक्ट के ऊपर आएंगे। पिछले साल में जो बजट के अंदर अनाउंसमेंट हुई, इस साल बजट में जो अनाउंसमेंट हुई वो हमें चाहिए। इकोनॉमिक सर में जो वर्कआउट हुआ इकोनॉमिक सर्वे के अंदर वो हमें चाहिए। इकोनॉमिक सर्वे एक तरह से इंडस्ट्रियल पॉलिसी के बारे में पूरी तरह से कवरेज ले लेता है ना, इस वजह से ये एक इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट होता है। ये दो चीजें हैं, इसके अलावा जो भी करंट अफेयर में चल रहा है, न्यूज में जो भी गवर्नमेंट ने पॉलिसी इधर उधर से अनाउंस कर दिया, जैसे आत्मनिर्भर भारत अभियान को लेकर बहुत चीजें डेवलप हुई, तो वो यूपीएससी ने पूछा। So these are the things you need to work upon rather than going too much into the basic perspective जिसमें आप इंडस्ट्रियल पॉलिसी वगैरह पढ़ते हो। ठीक है, सो एज फार एज पॉलिसी रिलेटेड जो वोकैबुलरी है वो क्या क्या है, तो ये नोट्स हैं उसके लिए, तो आई विल शेयर दीज नोट्स विद यू। आई डोंट थिंक आई नीड टू टीच देम अगेन। तो दिस इज इंडस्ट्रियल पॉलिसी, कब रिजर्व लिस्ट बनी, कब क्या बना, आप लोगों ने पढ़ रखा है या नहीं पढ़ रखा, पहले मुझे क्लियरली बताओ, फिर हम उस हिसाब से आगे चलेंगे। चलो सही है, पहले पढ़ा हुआ है। हाँ पढ़ा हुआ है ना। तो Yes, sir. ये ऐसा है कि इसका लेक्चर्स मेरे पास हैं, आई विल शेयर द लेक्चर्स विद यू इफ यू हैवंट स्टडीड दिस। सो इफ यू कैन जस्ट गो थ्रू द स्लाइड क्लियरली एक बार जल्दी जल्दी से, वो भी आपके लिए बेनिफिशियल है। तो दैट्स द बेसिक थिंग, इसमें सारे बेसिक्स हैं। 2021 तक के सारे करंट अफेयर्स भी इसके अंदर ही इंक्लूडेड है। ठीक है, जो जो बजट के अंदर जो पॉलिसीज आई, स्टार्टअप क्या होता है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, स्मॉल स्केल इंडस्ट्री को लेके क्या चल रहा है, उसकी नई डेफिनेशन क्या आई, एवरीथिंग इज देयर। दिस इज द न्यू डेफिनेशन फॉर एग्जांपल, सो इट टॉक्स अबाउट टर्नओवर एज वेल एज द इन्वेस्टमेंट, दोनों चीजें। ठीक है, कोविड-19 के टाइम पे गवर्नमेंट ने क्या वर्कआउट्स किए, अभी हमारे पोस्ट कोविड के टाइम पे आत्मनिर्भर भारत अभियान जब लॉन्च हुआ तो गवर्नमेंट ने क्या किया, इसका इम्पैक्ट क्या होगा, चैंपियन सेक्टर्स, फिर साइज बेस्ड लिमिटेशन है हमारी इंडस्ट्री के ऊपर, तो अगर उनका साइज बड़ा होता है तो उनके ऊपर कौन कौन से नए एक्ट लगने शुरू हो जाते हैं। ये इकोनॉमिक सर्वे में आया था बैक इन द डे, तो उनको बोलते थे इन इंडिया यू हैव ड्वार्फ्स। ड्वार्फ उसको बोलते हैं जो 10 साल से पुराना होता है एज में तो इंडस्ट्री, लेकिन उसमें नंबर ऑफ एम्प्लॉयमेंट लेस देन 100 हो, उसको ड्वार्फ बोलते हैं। तो उनके लिए ये वोकैबुलरी यूज की गई थी। तो इन्होंने यही कहा कि भाई क्योंकि इतने सारे एक्ट्स आपके ऊपर एक्स्ट्रा लगने शुरू हो जाते हैं, इसलिए कंपनीज प्रेफर टू रिमेन स्मॉल इन इंडिया, परपेचुअली दे डोंट वांट टू इंक्रीज साइज। तो कौन कौन से बेनिफिट स्मॉल स्केल इंडस्ट्री के लिए गवर्नमेंट ने दिए हुए हैं जिसमें कोई सनसेट क्लॉज नहीं है, तो वो यहाँ पे है। ठीक है, फिर आत्मनिर्भर भारत अभियान के अंदर क्या क्या इंडस्ट्री के लिए या कोल सेक्टर के लिए अलग अलग सेक्टर्स में इंप्रूवमेंट्स की गई, दे आर ऑल हेयर। Okay. So I'll share this slide with you in case you haven't studied the basics in industrial policy, you can ask. Now let's start working upon the current affairs of industrial policy. Just in case आपको इसका lecture required है तो वो भी मेरे पास ready है, I can share that with you. Okay. Settled as far as this is concerned. Yes, sir. ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। अपने पेन और पेपर तैयार रखिए, थोड़ा सा इंडस्ट्री को आप लिख के करेंगे कि अब अगर हम चैप्टर नहीं कर रहे तो एटलीस्ट हम इसके स्ट्रक्चरली तो ऐसी तरह से चलेंगे। ठीक है, so let me take you to the whiteboard and let's start with that. सिस्टमैटिकली अगर करंट अफेयर भी नहीं पढ़ोगे तो वो भी याद नहीं रहेगा, पॉच पॉच में काम हो जाना। मोमेंट, इंडस्ट्री एंड इंफ्रास्ट्रक्चर। So is the whiteboard visible to you? Yes. Okay. Okay.
अब देखिए इंडस्ट्री के अंदर ना सबसे पहली बात तो आती है इंडस्ट्रियल पॉलिसी की। तो गवर्नमेंट कुछ भी इंडस्ट्रियल पॉलिसी के लेवल पे अगर चेंज करता है दैट बिकम्स वेरी इंपॉर्टेंट। अब तक हमारी जो इंडस्ट्रियल पॉलिसी आई है, जो लेटेस्ट अभी चल रही है, दैट इज इंडस्ट्रियल पॉलिसी 1991। तो इसके अंदर जो बेसिक चीजें हैं वो आपने सबने पढ़ रखी हैं। Okay? अब इसके अलावा एक नेशनल इन्वेस्टमेंट एंड मैन्युफैक्चरिंग जोन्स स्टैब्लिश की गई थी अंडर नेशनल मैन्युफैक्चरिंग पॉलिसी। ये 2011-12 में पॉलिसी आया था, बजट के अंदर अनाउंस किया गया था। इसमें मैन्युफैक्चरिंग क्लस्टर्स बनाने की बात की गई। फिर अभी न्यू इंडस्ट्रियल पॉलिसी के बारे में हम अभी चिंता कर ही रहे थे कि इसमें क्या होगा, और 2019 में वी वर थिंकिंग कि ये आना चाहिए, बट देन ड्यू टू कोविड-19 दिस गॉट डिलेड, so we haven't heard from the government till then. But now what we are hearing are some of the percolations of this industrial policy in various matters, जैसे टैक्सेशन में छूट दी जाना, एमएसएमई की नई डेफिनेशन आना, ये सारी चीजें जो है धीरे धीरे, ऐसा बोला नहीं गया कि ये नई पॉलिसी है, so that the government has reserved for a later date, because see गवर्नमेंट को नई पॉलिसीज कब अनाउंस करनी चाहिए, जब ये लगे कि इन्वेस्टमेंट सेंटिमेंट बहुत अच्छा है, हर कोई उस पॉलिसी में पार्टिसिपेट करेगा। जैसे एससीजेड एक्ट को लेके 2005 में पॉलिसी आई, यस 2000 में पॉलिसी आ गया था, एक्ट 2005 में बना, क्योंकि जो मैक्रो इकोनॉमिक सेंटिमेंट है दैट वाज अपबीट। सो विद दैट रिस्पेक्ट गवर्नमेंट वाज टू लॉन्च द इंडस्ट्रियल पॉलिसी इन इंडिया आल्सो, बट अभी हम सिर्फ रिवाइवल मोड में आए हैं वापस। तो 2023 इसके लिए सही टाइम अभी नहीं होगा, probably towards the end of 2023 or 2024 they can launch this again, right? However इसके कुछ एस्पेक्ट्स हैं जो न्यूज में रहे, जो पॉलिसी लेवल पे हमने इम्प्रोवाइजेशन की, जैसे इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन 4.0, मेक इन इंडिया, यू हैव हर्ड ऑफ अ लॉट, है ना? तो ये मेक इन इंडिया इज सम ऑफ द पर्सपेक्टिव्स ऑफ आत्मनिर्भर भारत अभियान। ये चीजें हैं जो आज हमें इसी डायरेक्शन में लेके जाते हैं, मेक इन इंडिया। So let's deal with Make in India as to till right now इसका अंदर क्या क्या improvements हुई हैं, गवर्नमेंट ने क्या वर्कआउट किया, ठीक है? क्योंकि since this is current affairs so they can definitely ask you. तो Make in India के बारे में देखिए, what is Make in India program? When was it launched? This was launched in 2014 only. When government came into power, that's when they launched it. Okay? और इसमें करना क्या था? तो देखिए, to transform the country into global manufacturing and investment destination. Global manufacturing and investment destination. अभी मेक इन इंडिया चला कौन रहा है, नोडल मिनिस्ट्री कौन सी है? तो इट इज अंडर व्हाट मिनिस्ट्री? इट इज अंडर डिपार्टमेंट फॉर प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्री एंड इंटरनल ट्रेड। डिपार्टमेंट फॉर प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्रीज एंड इंटरनल ट्रेड अंडर मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री, अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री। इसके अधीन ये स्कीम चल रही है। ओके, सो क्या करना चाहते हैं इसके अंदर? सो देर आर अबाउट 27 सेक्टर्स अंडर मेक इन इंडिया 2.0, जिसमें गवर्नमेंट कोशिश कर रही है कि जो मैन्युफैक्चरिंग है उसको बढ़ाया जाए। तो 27 सेक्टर्स दे आर कवर्ड। तो प्रीलिम्स में ऐसा आ सकता है, मेक इन इंडिया 2.0 मतलब सेकेंड जनरेशन के अंदर। पहले 20 सेक्टर्स के ऊपर था, अभी 27 सेक्टर्स के अंदर चल रहा है। ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं मेक इन इंडिया के? व्हाट डज इट सीक टू अचीव? सो वो लिखिए, इंक्रीज मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर ग्रोथ, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर ग्रोथ टू 12 to 14% per annum. मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर ग्रोथ टू 12 to 14% per annum. Okay. Then increase the share of manufacturing in GDP. Increase share of manufacturing in GDP to 25% by 2022. 25% by 2022। जब ये 2014 में इसके बारे में बात की गई तो उस टाइम पे शेयर ऑफ मैन्युफैक्चरिंग वाज अराउंड 16 to 17%।
जब स्टार्ट किया गया था, अभी उसको बढ़ाकर 30% तक लेके जाना चाहते हैं. सो दैट स्टिल रिमेन्स अ टारगेट. देन क्रिएट 100 million additional jobs. Create 100 million additional jobs by 2022. एक ये भी इसका एक आइडियल था. अब 2022 तक इसके टारगेट्स बनाए गए थे जब ये 2014 में आया था. तो नाउ यू नीड टू थिंक अबाउट इट कि 2023 शुरू हो गया तो क्या हुआ क्या नहीं हुआ. तो रिगार्डिंग दैट वी नीड अ रिपोर्ट. सो इसके अंदर इसकी एक ओवरऑल डिपार्टमेंट में ना रिपोर्ट दाखिल की 2022 में. उस रिपोर्ट के अंदर कुछ चीजें आई कि बहुत सारी रिस्ट्रिक्शंस हैं जिसकी वजह से पॉलिसी उतना काम नहीं कर पाई जितना कि हो सकता था. फॉर एग्जाम्पल रिस्ट्रिक्टिव एंड डिस्क्रिमिनेटरी कंडीशंस, ऐसा कुछ उन्होंने बोला, which prevented local suppliers from participating in the Make in India program as much as they could have participated. So that became a concern in Make in India. Now there was a report 8 years of Make in India. तो 2014 से लेके 2022 तक क्या हुआ. तो करंट अफेयर्स में दिस इज द इमेज दैट इज सर्कुलेटिंग. ओके, सो एनुअल एफडीआई. तो अचीवमेंट्स क्या हैं? These are the achievements in the past 8 years. Annual FDI in manufacturing sector doubled to $83 billion. आपसे ये अमाउंट तो नहीं पूछेंगे, लेकिन ये वाली स्टेटमेंट आ सकती है. Since the start of Make in India, annual FDI in manufacturing sector doubled. More than doubled भी लिख सकते हैं, पेपर में चलेगा, वो भी स्टेटमेंट चलेगी. ठीक है. Then government focus on key sectors like semiconductors. तो semiconductors के ऊपर गवर्नमेंट का फोकस है. Then preference of in public procurement of goods, works and services, and basically PLI boost to localized manufacturing. 14 schemes are operational. इसमें से ये वाली जो स्टेटमेंट है ना, एक एनुअल एफडीआई डबल, ये बहुत न्यूज में था और यही आपसे पूछने का उनका स्कोप भी ज्यादा बनता है. ठीक है, एफडीआई इनफ्लोस को लेकर 2014-15 में एफडीआई इनफ्लोस वर अराउंड $45 billion and now they are about $83 billion. So this is the highest ever that was recorded in 2021-22. Okay, so that's what we consider as one of the achievements of this. क्लियर हुआ? तो इसमें बस यही क्वेश्चन पूछने के उनके चांस हैं, बाकी आपको कोई टेंशन नहीं. अच्छा, इसके अलावा मेक इन इंडिया के अलावा जो नया एक और आया, दैट इज प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम. बहुत सुना होगा आपने इसके बारे में न्यूज़पेपर्स में. नेक्स्ट इज दिस वन, प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम, PLI. ये भी मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को बूस्ट देने के लिए आत्मनिर्भर भारत अभियान का पार्ट एंड पार्सल है, प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम. तो राइट लिटिल बिट अबाउट दिस प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम. देखिए, शुरू करें. Okay. So it is an outcome and output oriented scheme. PLI is an outcome and output oriented scheme. कहने का मतलब जितनी प्रोडक्शन करोगे उतना ज्यादा इंसेंटिव्स मिले. ठीक है. Where incentives will be paid only if the manufacturer makes the goods. Incentive will be paid only if the manufacturer makes the goods. Makes the goods. ये important है. ठीक है. So it provides cash incentives for 5 to 7 years. Cash incentives for 5 to 7 years. And all sunrise and important sectors are covered. ऐसे लिख लो, to all sunrise मतलब उभरते हुए and important sectors are covered. Okay. जैसे कि ऑटोमोबाइल, नेटवर्किंग, फूड प्रोसेसिंग,
केमिस्ट्री, फोटोवोल्टिक सेल मैन्युफैक्चरिंग, ये सारे सनराइज सेक्टर क्या होते हैं जो प्रॉमिसिंग होते हैं कि हाँ इनमें इनिशियल स्टेज में थोड़ी सी आप सपोर्ट दे दो, बाद में जाके बहुत ग्रोथ क्रिएट करेंगे। तो सनराइज के नीचे आप लिख लीजिए प्रॉमिसिंग सेक्टर्स। तो नए हैं, इनमें अगर अभी आप इन्वेस्टमेंट कर लेंगे इनिशियल स्टेज में, डेफिनेटली इन फ्यूचर दे विल गिव यू गुड ग्रोथ। दैट इज सनराइज सेक्टर। ओके, नाउ who is taking care of this entire scheme, how it goes about production linked incentive scheme? ये हर मिनिस्ट्री के साथ इन्होंने इसको तरह से अटैच कर दिया है अभी, ठीक है। तो इसके बारे में लिखिए, इट वाज इंट्रोड्यूस्ड इन मार्च 2020 एज अ पार्ट ऑफ आत्मनिर्भर भारत अभियान, एज अ पार्ट ऑफ आत्मनिर्भर भारत अभियान। अभी इंसेंटिव काम कैसे करता है? what kind of incentive is this? How does it work? So it is basically a kind of subsidy to the sector, and it is a direct payment from the budget to goods made in India. The amount varies from sector to sector and is based on disadvantage or disability faced by the sector. कहने का मतलब जितना ज्यादा वो सेक्टर का डिसेबिलिटी या डिसएडवांटेज होगा, उतना ज्यादा उसको इंसेंटिवाइज किया जा सकता है। तो इन तीनों के बेस पे आपको क्वेश्चन में क्या पूछेंगे? वो बोलेंगे कि सब सेक्टर्स को एक जैसा अमाउंट पे होता है इंसेंटिव। एक जैसा नहीं है, सारे सेक्टर्स का अलग अलग, एंड इट इज बेस्ड अपॉन द डिसेबिलिटी फेस्ड बाय द सेक्टर rather than the capability of the sector. It is the disability of the sector. ठीक है। Then payments are made directly from the budget. गवर्नमेंट पेमेंट करती है इस चीज के लिए। ओके, तो ये रखा गया है इसके अंदर। Is it clear? Yes, sir. Hello. Okay. So this is the production linked incentive scheme. अब ये बहुत सारे सेक्टर्स के लिए न्यूज में था, कभी ये टेक्सटाइल के लिए, कभी किसी के लिए। So it is like this. Okay. Then right now, in January 2023, there was an editorial in Hindu. That editorial talked about, sorry, not Hindu, Hindustan Times, that is for growth, bolster the manufacturing sector. ये एक एडिटोरियल था, तो इन्होंने इसी के बारे में बात की कि क्या हो सकता है इसको लेके। So let's talk about this a little, and that will give you an entire idea of the manufacturing sector also. Okay. So अभी हमारे जो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर है उसमें कॉम्पिटिटिवनेस से देखें तो सारे नेसेसरी इंग्रेडिएंट्स हैं जो हर इंडस्ट्रियल कंट्री के अंदर रिक्वायर्ड होते हैं, हमारे पास भी हैं। मेजरली इस टाइम पे हम पुश किस चीज को कर रहे हैं? वी आर ट्राइंग टू पुश अ ह्यूज सेमी स्किल्ड लेबर फोर्स इनटू अ मोर स्किल्ड वन दैट कैन क्रिएट मोर वैल्यू एडेड प्रोडक्ट्स। जैसे आईफोन ये बनना शुरू हो गया इंडिया में, तो दैट इज व्हाट इज हैपनिंग। तो इसमें ये एक प्रोजेक्शन की गई थी लेटली दैट बाय 2030 मिडिल क्लास इज एक्सपेक्टेड टू हैव द सेकंड लार्जेस्ट शेयर इन ग्लोबल कंजम्पशन एट 17%। और अगर आप इस साल का इकोनॉमिक सर्वे भी पढ़ते हो तो उसमें यही बोला गया कि दो चीजें जिन्होंने सबसे ज्यादा इंडियन इकोनॉमी को संभाल के रखा है, जिनमें से एक प्राइवेट कंजम्पशन है ठीक है, और दूसरा रोबस्ट गवर्नमेंट सपोर्ट है। ओके, सो दैट बीइंग सेड, अब गवर्नमेंट की बहुत सारी स्कीम्स हैं जो इसके अलावा भी चल रही हैं इसी चीज के अंदर। सो मेक इन इंडिया 2.0 इज देयर, ये हो गया। एक आत्मनिर्भर भारत कैंपेन के ऊपर भी बात कर लेते हैं। ये क्या है? ये लिख लिया आपने? Yes, sir. प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव के बारे में तो यही क्वेश्चंस आएंगे। दे विल ट्राई टू आस्क यू क्या सेम इंसेंटिव है, नहीं डिफरेंट है। किसके बेसिस पे डिफरेंस है? डिसेबिलिटी। जो सेक्टर जितना पिछड़ा हुआ है उतना ज्यादा इंसेंटिव है, जितना उसको प्रॉब्लम आती है मैन्युफैक्चरिंग में उतना ज्यादा इंसेंटिव है। कौन देता है? यूनियन गवर्नमेंट देती है, स्टेट गवर्नमेंट का कुछ लेना देना नहीं है। तो दैट इज प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम। फिर इसके अलावा है आत्मनिर्भर भारत अभियान। आत्मनिर्भर भारत अभियान ये भी बहुत न्यूज में रहता है हमेशा। तो फर्स्ट ऑफ, जब ये वर्ड पढ़ते हैं ना आत्मनिर्भर भारत, इसका इंग्लिश ट्रांसलेशन बनता है सेल्फ रिलायंस। बट सेल्फ रिलायंस को एक तरह से नेगेटिवली भी देखा गया है वर्ल्ड इकोनॉमी के अंदर फ्रॉम टाइम टू टाइम।
हमें ये लगता है कि भाई अब ये इंपोर्ट्स नहीं करेंगे या कट डाउन करेंगे इंपोर्ट, तो इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन जैसी पॉलिसी पे वापस जाए, लेकिन ऐसा है नहीं एक्चुअली. So in the areas where we can be competitive, we are trying to be manufacturing more. The areas which we are needing to have more things, for example, import करना पड़ेगा तो वहाँ कर रहे हैं, कोई ऐसा नहीं. Okay. So इसका नाम है Self-Reliant India Campaign, and it was started in 2020 post COVID. That's when it started. प्राइम मिनिस्टर ने अनाउंस किया था और इसके अधीन कोशिश ये की गई थी इंडिया को फिस्कल स्टिमुलस दिया जाए, गवर्नमेंट के द्वारा पैसा खर्च किया जाए of about 20 lakh crore rupees, that is equivalent to 10% of India's GDP. So under this, the government provided a fiscal stimulus. Fiscal stimulus मतलब extra spending by the government, okay, of 20 lakh crore rupees. Okay, that is equivalent to 10% of India's GDP. 10% of India's GDP. Fine. So that's what we were doing. Now, under this, there were 5 pillars of Atmanirbhar Bharat, and those 5 pillars can form a question within themselves. जिन चीजों पे आत्मनिर्भर भारत अभियान टिका हुआ था, पहला है इकोनॉमी, दूसरा इंफ्रास्ट्रक्चर, देख रहे हो, इकोनॉमी, इंफ्रास्ट्रक्चर, तीसरा है सिस्टम्स, जितने भी गवर्नेंस सिस्टम, किसी भी तरह का सिस्टम है, देन वाइब्रेंट डेमोग्राफी, and next is demand. तो ये 5 बेसिक चीजों के ऊपर सारे का सारा जो आत्मनिर्भर भारत है वो टिका हुआ है. लेट मी शो यू अ इंफोग्राफिक फ्रॉम प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो ऑन दिस. So first off is economy. So the quantum jump, not incremental changes. That was the idea. कि एकदम से इंजेक्शन 20 लाख करोड़ रुपए का लगेगा तो क्वांटम जंप आएगा. Infrastructure, so one that represents a modern India. System should be technology driven, तो digital India initiative जो आया बहुत ज्यादा. Demography, so vibrant demography of the largest democracy. तो working age population हमारे पास है ज्यादा, तो हमें उसको utilize करना चाहिए. Demand, so full of power of demand and supply. तो हमारे यहाँ पे rising middle class is one that can create a lot of demand. So that's what we'll do. So the focus is on land, labor, liquidity, and laws to cater to laborers, middle class, cottage industry, MSME, and other industries, among others. So bold reforms. First is supply chain reforms for agriculture. ये means में सीधा सीधा क्वेश्चन पूछा गया उसके बाद 2021 में. Then rational tax system. तो tax system की rationalization अभी भी चल रही है. Rationalization is about why I should give the tax. Yeah. तो बहुत सारे टैक्सेस की जगह पे एक टैक्स सिंप्लीफिकेशन भी रैशनलाइजेशन का एक पार्ट है. तो दैट्स व्हाट वी आर स्टिल गोइंग ऑन. देन सिंपल एंड क्लियर लॉज. तो पुराने लॉज हटा रहे हैं, नहीं लेके आ रहे हैं. जैसे इनकम टैक्स में भी डायरेक्ट टैक्स कोड लाने की कोशिश कर रहे हैं. केपेबल ह्यूमन रिसोर्सेज ऑन द बेसिस ऑफ प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना एंड सो मेनी अदर वेलफेयर मेजर्स, एंड अ स्ट्रॉन्ग फाइनेंशियल सिस्टम बेस्ड ऑन Basel III norms and all that we are trying to bring in. तो ये सारे रिफॉर्म्स बेस्ड एजेंडा आत्मनिर्भर भारत अभियान के अधीन शुरू किया गया था. ठीक है. अभी आत्मनिर्भर भारत अभियान जो है करीब 2 साल से चल रहा है इंडिया में, और उस हिसाब से देखा जाए तो वी आर बेटर पॉइज्ड इन टर्म्स ऑफ मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर एज कंपेयर टू बिफोर. देन इनके अलावा पॉलिसी लेवल पे एक और चीज जो निकल के आई इंडस्ट्रियल पॉलिसी के अंदर, दैट इज स्टार्टअप इंडिया. स्टार्टअप इंडिया. तो स्टार्टअप इंडिया प्रोग्राम के तहत अब स्टार्टअप क्या होता है, पहले तो ये डिफाइन करना बहुत जरूरी है. तो लिख लीजिए. इट रेफर्स टू ए कंपनी इन द फर्स्ट स्टेजेस ऑफ ऑपरेशन. कंपनी इन द फर्स्ट स्टेजेस ऑफ ऑपरेशन, अभी शुरू ही हुआ है, उस कंपनी को स्टार्टअप बोलेंगे. ठीक है. पुराना नहीं होना चाहिए बहुत ज्यादा. देन सेकंड क्या है, they generally start with high cost and limited revenue.
high cost and limited revenue, and therefore require capital or investment from variety of sources. Capital or investment from variety of sources. तो कंसिडरेशन ये है, आगे लिखिए. Under the Startup India initiative, the companies which are not older than 7 years from the date of registration, not older than 7 years from the date of registration, 7 years, and not more than 10 years in case of biotech, are considered as startups. Okay. The turnover, annual turnover, should be less than, कितना है, right? 100 crores. Is it 100 crore? No, Yes. 25 crore right now. Annual turnover should be less than 25 crore. Okay. Then next. So 25 crore. Then it should not have been formed by splitting up a company already in existence. जैसे हीरो होंडा ऑलरेडी है, उसमें से एक हीरो बन गया, एक होंडा बन गया, तो हीरो मोटोकॉर्प वाज अ न्यू वन, तो हीरो को स्टार्टअप नहीं मानेंगे. ठीक है, should not have been formed by setting up a company that already existed. And lastly, it should work towards innovation. कुछ नया बनाने के लिए हो, ऐसा नहीं कि पुराना ही जो घिसे पिटी चीजें चलती आ रही हैं वही सब तुम भी करते हो. Then it's not called a startup. Okay. Unicorn के केस में हम बोलते हैं it is 100 crore. So I think you're confusing it with a unicorn. तो दूसरी टर्म यहाँ पे भी लिख लो अब. Unicorn क्या होता है? So a unicorn is any privately owned firm with a market capitalization of more than $1 billion US. MCAP is more than $1 billion US, not rupees. Okay. So ये न्यू बिजनेस मॉडल के अधीन आता है यूनिकॉर्न, तो उनको बोलते हैं. एंड बड़ी सारी कैटेगरीज हैं, जैसे एजुकेशनल, टेक्नोलॉजी, फिनटेक, बिजनेस टू बिजनेस कंपनीज, अलग अलग तरह की यूनिकॉर्न्स हैं. ठीक है. तो अब इसके बारे में सिचुएशन क्या है इंडिया की करंटली? स्टार्टअप इंडिया जब से चला है, व्हाट इज द सिचुएशन राइट नाउ इन 2023? Okay. India has become the third largest startup ecosystem in the world. India has become the third largest startup ecosystem in the world after US and China. US number 1 पे, China number 2 पे. After US and China, हमारे यहाँ करीब 75,000 स्टार्टअप हैं अभी, जिसमें से करीब 49% टीयर 2 और टीयर 3 सिटीज में, 75,000 स्टार्टअप्स, और छोटे शहरों में करीब उसके आधे स्टार्टअप्स हैं. टीयर 2 एंड 3 सिटीज में यू हैव अबाउट 49% ऑफ दिस 75,000 स्टार्टअप्स. सो हर फील्ड में, एजुकेशन, हेल्थ, एविएशन, एग्रीकल्चर, आईटी, एवरीवेयर, एक ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स है जो बेसिकली इन सब चीजों को मेजर करता है कि हमारे स्टार्टअप्स कितने इनोवेटिवली काम कर रहे हैं. सो दैट इज ऑल्सो रेलिवेंट है. ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स रैंकिंग ऑफ इंडिया, ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स रैंकिंग
of India has improved to 46. Has improved to 46 out of 130 countries. पहले हम 80-85 यहाँ पे होते थे 2015 में. Sir, Out of 130 countries. Okay. So it is given by WIPO. कौन देता है? World Intellectual Property Organization. WIPO. It's a body of UN. World Intellectual Property Organization. WIPO, which is a body of UN. अभी ये जो इनोवेशन इंडेक्स है किस तरह से स्कोर करता है देखिए. So there is human capital and research, infrastructure, market sophistication, business sophistication, knowledge and technology outputs, creative outputs and institutions. तो इन सब लेवल पे हमें जज किया जाता है. इंडिया की पोजीशनिंग ये है. स्कोर अलग अलग इंस्टीट्यूशंस वगैरह हमारे सब बहुत अच्छे हैं. अभी ठीक चल रहा है. फाइन. दिस इज द सिचुएशन. तो 132 टोटल इकोनॉमीज में इसकी रिसर्च होती है. उसके हिसाब से दिस इज द सिचुएशन. क्लियर हो गया. टॉप 5 में स्विट्जरलैंड है, स्वीडन है, यूएस है, यूके है. ये they continue to be in top 5. Republic of Korea has entered first time in top 5 in 2021. So that all was going on. China 12वें नंबर पे है. तो that's how the things are going on. ठीक है. तो इंडिया 46th नंबर पे है. सबसे टॉप में इस इंडेक्स में अभी स्विट्जरलैंड चल रहा है राइट नाउ. 2021 में ये लास्ट आया था. इट्स लाइक अ बायएनुअल थिंग. अभी 2023 में दोबारा आएगा whenever it comes. So that's the global innovation index. Okay, coming back to startups. So पेटेंट फाइलिंग जो है वो एक अलग क्राइटेरिया है जिसके थ्रू हम स्टार्टअप्स को जज कर सकते हैं कि इंडिया में कैसे चल रहा है. ठीक है. सो पेटेंट फाइलिंग को अगर देखा जाए तो देयर आल्सो वी हैव इंप्रूव्ड अ लॉट इन टर्म्स ऑफ पेटेंट फाइलिंग. कि नई इनोवेशंस होती हैं तो पेटेंट फाइल होता है ना. सो इंडिया रैंक्स 9th in the world. India ranks 9th in the world in terms of patent filing. 9th in the world in terms of patent filing. Okay. तो पहले हमारी पोजीशन 13th होती थी 2013 में. अभी 2021 में 9th हो गया है. तो दिस इज गुड. देन दूसरा इसमें जो मेरिट है दैट इज पब्लिकेशंस कि हमने कितने रिसर्च पेपर्स पब्लिश किए. तो पब्लिकेशंस. So in terms of publications, India ranks 3rd in the world. India ranks 3rd in the world in terms of research papers. In terms of research papers. तो उस तरह से देखा जाए तो स्टार्टअप इकोसिस्टम इनोवेशन को तो ड्राइव कर ही रहा है. अदरवाइज भी ठीक है. R&D के ऊपर सफिशिएंट एक्सपेंडिचर अब आजकल पूरा है. हमारे यहाँ पे करीब 5 लाख लोग हैं जो R&D में ही हैं इंडिया में. They are R&D personnel. And this has increased by about 50% in last 8 years. पहले करीब 2.5 लाख होते थे. अभी 5 लाख हो गए. एकदम से उसमें जंप आया. And even women participation has doubled. तो ये दो लिखना जरूरी है स्टेटमेंट क्योंकि गवर्नमेंट सपोर्ट के बेसिस पे होता है. नेक्स्ट पैराग्राफ. So India has increased its gross expenditure on R&D. India has increased its gross expenditure on R&D by more than 3 times in last 10 years. By more than 3 times in last 10 years. तो R&D expenditure बढ़ा है 3 times. Okay. Then women participation has increased to 24%. पहले करीब 17%, 13% होती थी 2000 में. 2001 के अंदर. अभी ये 2018-19 के फिगर्स हैं. तो उस हिसाब से बढ़ गए. Then India spent 0.7% of its GDP.
0.7% ऑफ जीडीपी ऑन R&D, मतलब करीब 1% ऑन R&D हम स्पेंड करते हैं, ठीक है। तो ये 1% भी अब जाके हुआ है, पहले तो बहुत बुरे हालत है, ठीक है। तो इसको अगर कंपैरेटिव सेंस में देखना है तो चाइना स्पेंड्स 2%, रशिया स्पेंड्स अबाउट 1.1%, सो वी आर एट पार अगर देखा जाए तो। ब्रिक्स कंट्रीज के साथ अगर देखें तो ब्राजील ऑल्सो इज अबाउट 1.3%, अफ्रीका इज अबाउट 0.8%, सो इट्स इन द सेम टेरिटरी दैट वी आर स्पेंडिंग। कोई बहुत ज्यादा कम नहीं है, कोई बहुत ज्यादा नहीं है, इट्स इन दी नॉर्मल, ओके। वी आर नॉट लाइक यूएस और चाइना, यूएस स्पेसिफिकली, पर उसमें सबसे ज्यादा होता है, ठीक है। इनफैक्ट जो नंबर ऑफ पेटेंट्स फाइल्ड है, यूएस इज द सिंगल कंट्री, अगर पूरे वर्ल्ड के पेटेंट्स लिए जाएं तो 50% पेटेंट्स यूएस में फाइल होते हैं, 20% पेटेंट्स चाइना में फाइल होते हैं, और बाकी बचे कुछ जितने भी 30% है वो बाकी सारे वर्ल्ड की कंट्रीज में होते हैं। दैट इज दी स्टार्टअप, फाइन। तो करंट अफेयर विद रिस्पेक्ट टू स्टार्टअप इतना ही है। देन देयर इज अ लॉट ऑफ टॉक गोइंग अबाउट दिस आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, इंडस्ट्री रेवोल्यूशन 4.0। सो ये भी अपने आप में एक कंसर्न हो सकता है प्रीलिम्स के अंदर। सो व्हाट इज दिस IR 4.0, इंडस्ट्री रेवोल्यूशन 4.0? So this is also considering from the policy perspective, इसमें क्या चल रहा है? So the use of artificial intelligence in industry, the use of artificial intelligence in industry is the benchmark for Industrial Revolution 4.0, is the benchmark for IR 4.0. Okay. आजकल कौन सा AI टूल सबसे ज्यादा न्यूज में? चैट जीपीटी, हेड ऑफ इट। हेलो हेलो, Yes, sir. है ना? तो चैट जीपीटी वैसे तो मैं शायद आपको दिखा देता खोल के, लेकिन उनके ना सर्वर्स आजकल बेचारों के डेड ही रहते हैं। मैंने एक दो बार ट्राई किया चैट जीपीटी यूज करने का या खोल के देखने का, तो मोस्ट ऑफ द टाइम इट इज सेड कि यार सर्वर्स आर ब्लॉक्ड, नॉट वर्किंग, व्हाटएवर एरर हो रहे होते हैं, क्योंकि एवरीबॉडी इज ट्राइंग टू वर्क विद चैट जीपीटी दीस डेज। इट इज बेसिकली अ चैटबॉट। जो आप इसको एक इंस्ट्रक्शन फीड कर दोगे, वही इंस्ट्रक्शन को ये रेप्लिकेट करके कुछ मीनिंगफुल आंसर आपको देने की कोशिश करेगा। इट्स अ न्यूज फॉर ऑल द गुड एंड बैड रीजंस। सो अरे चल पड़ा, सरप्राइज सरप्राइज। वेलकम टू चैट जीपीटी, लेट्स लॉग इन। क्या करता है पता चलेगा अभी। अभी यूपीएससी का एग्जाम क्रैक करवाने की कोशिश करें इससे। एमबीए का एग्जाम तो क्लियर कर लिया इसने हार्वर्ड में, इधर उधर। So this is an OpenAI API. OpenAI means everybody can use it, everybody can develop it. Time लगेगा, you don't have time, so this is it. So it interacts in a conversational way. So I will put in like मुझे ये चाहिए, so accordingly it will give me the dialogue. So it makes it possible for ChatGPT to answer follow-up questions, admit its mistake, challenge incorrect premises and everything. So that's how ChatGPT works. It will take some time for me to set it up, and you can set it up on your computers अभी चल रहा है तो, and you can see how it works. Basically जब प्रोग्रामर्स पहले कोडिंग करते थे या कुछ करते थे, अब अगर सपोज आपको कुछ चाहिए तो यू कैन जस्ट आस्क एंड इट विल डू इट फॉर यू। इट इज लाइक दिस, एंड you can ask it to write an essay on a particular thing, it will do it for you. So you can really use it for your preparation also. ठीक है। What kind of questions will be asked in UPSC? Try करके देखो। And what are the expected questions for UPSC prelims this year? So maybe it will try and search some. See, what is the hub? ये बैकएंड से जितना भी गूगल पे इंफॉर्मेशन है उसको गैदर करेगा, फिर उसके बेसिस पे आपको कुछ रिजल्ट प्रोड्यूस करके देगा। दैट्स द कंसर्न। तो ये है और कुछ नहीं। तो rather than you trying to search the web entirely for something, this is trying to do it for you. तो लिखिए चैट जीपीटी, what is this? I'm expecting at least one question on chat GPT this year. चाहे साइंस एंड टेक में आ जाए चाहे वैसे भी आ जाए। तो है क्या? लिखिए इट्स एन ओपन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस chatbot or conversational AI,
based on language learning models, LLM. Based on language learning models, LLM. So what it does is कि जो भी तुम लिख रहे हो उसको लर्न कर रहा है, उस हिसाब से तुम्हें आंसर दे रहा है. That's the job of ChatGPT. However, it has certain limitations. It has certain limitations. Since its knowledge is restricted to global events that occurred before 2021, क्योंकि इसकी प्रोग्रामिंग तब 2021 में खत्म हो गई थी, नई चीजें नहीं उठा रहा अभी. Global events that occurred before 2021. Okay, so अभी वाले बाद में इसका फिर अपडेट आना पड़ेगा, then it can come in. So it functions through machine learning. It functions through machine learning. Machine learning was one of the basic things that is developing the Industrial Revolution 4.0. That means the software or the hardware is able to learn rather than आपने जो एक स्टैंडर्ड सॉफ्टवेयर उसमें इंस्टॉल किया है वो उसको अपने आप इवॉल्व कर सकता है. दैट इज मशीन लर्निंग बेस्ड अपॉन आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क. Based upon artificial neural network or an artificial brain. Neural network is something that we have in our brain. तो उसी के को मिमिक किया गया, artificial neural network. Okay. So what is artificial neural network? अभी दिखाता हूँ. This is something that basically simulates what human brain functionality is. So artificial neurons stimulate the basic functions of biological neurons: inputs, processing, output, and passing information to other neurons. Each input is given a weight to signify how important it is compared to other inputs. So that is the artificial neural network. तो ये number of inputs हैं, उनमें से processing elements हैं, फिर output आएगा इस तरह से. जो important है वो workout कर लेगा. जैसे हम भी 10 चीजें हो रही हैं आपके आसपास अभी जहां पे आप बैठ के क्लास देख रहे हो, लेकिन उनमें से आपका फोकस एक चीज के ऊपर है. तो यूर ब्रेन वर्क्स इनटू दिस वे कि आप इंपॉर्टेंट चीजें डिसर्न कर पाते हो जिस पे फोकस करना है. गाड़ी चला रहे हो तो तब भी ऐसे ही होता है. तो यू आर एबल टू फोकस. तो दैट्स व्हाट वी आर डेवलपिंग इट राइट नाउ. तो ये मशीन लर्निंग के अंदर अब ये जो नेक्स्ट कॉन्सेप्ट आ रहा है दैट इज आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क्स. एंड दिस कैन बी अ क्वेश्चन. आइदर वेज कहीं से भी कनेक्ट करेंगे इसको, लेकिन ये क्वेश्चन बनना चाहिए. ठीक है. सो दैट्स एआई, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस फॉर यू. आगे बढ़ते हैं चैट जीपीटी से. नेक्स्ट एस्पेक्ट इज द विजिजम पोर्ट प्रोजेक्ट. ये न्यूज में रहा. What is this? विजिजम पोर्ट प्रोजेक्ट. VIZHINJAM. विजिजम पोर्ट प्रोजेक्ट. कई बार ना आउट ऑफ द कॉन्टेक्स्ट से ऐसे क्वेश्चन से आ जाते हैं, तो हम सोचते हैं ये हो क्या रहा है ना. तो इट इज लाइक दैट काइंड ऑफ अ क्वेश्चन. तो व्हाट इज दिस? इट्स इन केरला हाई कोर्ट में ना अदानी ग्रुप के अगेंस्ट एक केस हुआ था लेटली. तो उन्होंने बोला कि मुझे सिक्योरिटी कवर चाहिए फॉर हैविंग द पोर्ट कंस्ट्रक्शन, क्योंकि जो फिशरमैन है केरला में, दे आर हैविंग अ वायलेंट प्रोटेस्ट अगेंस्ट दिस पर्टिकुलर पोर्ट. दैट इज द सिचुएशन. अब ये पीपीपी मोड में अदानी ग्रुप बिल्ड कर रहा है. इट्स प्लेसेस नियर तिरुवनंतपुरम, केरला. तो दैट्स द सिचुएशन. तो आपने बस इसमें याद क्या रखना है, विजिजम पोर्ट प्रोजेक्ट साइड में लिख लो. इट्स नियर तिरुवनंतपुरम, केरला. ओके. पीपीपी विद अदानी ग्रुप. तो दैट्स द थिंग. इस वजह से ये न्यूज में था और इस वजह से आपको क्वेश्चन बन सकता है. नाउ लेट्स डील विद द एमएसएमई सेक्टर अ लिटिल बिट. स्मॉल स्केल इंडस्ट्री की हमें मालूम है कि डेफिनेशन रीडिफाइन की गई थी और उस डेफिनेशन को भी आपने देखा भी है ना. तो उसके बेसिस पे क्या चेंजेस और आ सकते हैं, अभी क्या करंट न्यूज में चल रहा है.
So MSME sector is an important pillar of Indian economy, contributing 45% to manufacturing output. Okay. It provides 110 million jobs. कितने लोग इसमें जॉब कर रहे हैं? 110 million jobs, which is 20 to 23% of total employment in India. 20 to 23% of total employment in India. However, only 15% are registered. Only 15% are registered on Udyam portal. So what is this Udyam portal? ये बेसिकली उद्योग आधार के बारे में उद्यम पोर्टल. तो उद्यम पोर्टल के बारे में थोड़ा सा एड ऑन यहाँ पे लिखे. इट वाज लॉन्च्ड ऑन 1st July 2020 for online registration of MSMEs. And it's under Ministry of MSME only. Ministry of Small Scale Industry or Micro, Small and Medium Enterprises. Okay. Then it is further linked to CBDT and GSTN. It is further linked to Central Board for Direct Taxes and Goods and Services Tax Network. GSTN के ऊपर रजिस्ट्रेशन कराना पड़ता है अगर आपको सपोज आप GSTN चाहिए आपको. ओके. देन बेसिकली ये क्या करेगा, ये जो भी MSMEs यहाँ पे रजिस्टर्ड होंगी तो वो वाली MSMEs प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग के अंदर बैंक से लोन ले सकते हैं. आपको याद है 7.5% प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग MSMEs के लिए. ठीक है. So qualify for priority sector lending loans from banks once they are there. And there is a DigiLocker facility also. Basically DigiLocker में क्या है, ये UPSC Prelims में भी पूछा था एक बार. जितने भी आपके इधर उधर के सर्टिफिकेट्स होते हैं, क्लास 10 सर्टिफिकेट, आधार कार्ड, एक्सेट्रा, वो सारे इसके साथ लिंक किए जा सकते हैं. एंड इट इज एज गुड एज ओरिजिनल सर्टिफिकेट्स. गाड़ी की RC, एवरीथिंग. तो आपको वो चीजें जेब में कैरी करके जाने की जरूरत नहीं है. अगर आप डिजिलॉकर खोल के दिखाएंगे फोन पे, इज एज गुड एज द ओरिजिनल डॉक्यूमेंट. उस पर लिखा होता लीगली. सो दिस इज द सिचुएशन विद MSMEs राइट नाउ. आगे लिखिए. The MSME ministry has signed in 2023-22 क्या हो रहा है. The MSME ministry has signed memorandums of understanding with Ministry of Tourism, and National Small Industries Corporation, NSIC, National Small Industries Corporation, for sharing the Udyam data. Okay. Next. The MSMEs contribute 8% to India's exports. 8% to India's exports. तो significant contributor है देखा जाए तो.
8% of GDP, sorry, not the 8% of India's exports. इनफैक्ट अगर यही लिखना है तो इसको ऐसे ही रहने दो, इसमें लिखो 50% of India's exports, not 8%. 50% of India's exports, 8% to India's GDP. India's GDP. ये 2022-23 के इनके फिगर्स हैं एज पर इकोनॉमिक सर्वे. ओके, देन एक इसमें ट्रबल एरिया क्या है जो इकोनॉमिक सर्वे ने पॉइंट आउट किया है. ओनली 16% ऑफ small and medium enterprises, SMEs, get access to timely finance. Get access to timely finance. इस वजह से पिछड़ जाते हैं, उतना काम नहीं कर पाती. ठीक है, तो इसी वजह से क्रेडिट नहीं मिलेगा तो इनोवेशन नहीं होगी, बहुत सारी चीजें नहीं होगी. दैट क्रिएट्स अ ट्रबल. देन एमएसएमई को लेके गवर्नमेंट की जो अलग अलग स्कीम्स चल रही हैं वो बहुत सारी हैं वैसे तो. एक एमएसएमई इनोवेटिव स्कीम है, एक स्फूर्ति स्कीम है, एक एस्पायर स्कीम है, अलग अलग स्कीम्स हैं. तो उनके बारे में भी थोड़ा थोड़ा वर्कआउट करना जरूरी है बिकॉज ये नई है सारी की सारी स्कीम्स. तो व्हाट आर द स्कीम्स रिलेटेड टू एमएसएमई राइट नाउ. डेफिनेशन तो डेफिनेटली याद रखनी है आपने कि एमएसएमई की ऑनगोइंग डेफिनेशन क्या है. याद है ना? नहीं याद तो जो स्लाइड में प्रोवाइड करूंगा उसमें देख लेना लेटेस्ट क्या चल रहा है. ठीक है, तो उसमें दो एस्पेक्ट्स हैं. अब एक तो टर्नओवर कंसिडरेशन करते हैं और एक कंसिडरेशन करते हैं कि इन्वेस्टमेंट कितनी. पहले सिर्फ कैपिटल इन्वेस्टमेंट देखते थे, इन्वेस्टमेंट इन प्लांट एंड मशीनरी. ओके, सो व्हाट इज दिस स्कीम फॉर स्फूर्ति स्कीम. सबसे पहले ये ले लेते हैं, SFURTI. So it is a scheme of fund for regeneration of traditional industries. Scheme of fund for regeneration of traditional industries. That is what the scheme. तो ये स्कीम 2005 में लॉन्च हुई थी, शुरुआती दौर में, तब से चल रही है. एंड KVIC है जो इसके लिए नोडल एजेंसी है. तो खादी विलेज इंडस्ट्रीज कमीशन जो है दैट इज द नोडल एजेंसी. KVIC, खादी एंड विलेज इंडस्ट्रीज कमीशन. ओके, क्या करता है स्फूर्ति स्कीम के अंदर? देखिए, रिसेंटली द मिनिस्ट्री ऑफ एमएसएमई inaugurated 50 Spurti clusters. 50 Spurti clusters. Under the scheme, there are two types of clusters. First are regular clusters. Cluster मतलब होता है group of industries या group of artisans, उनको इकट्ठा कर देता है. तो regular clusters जिसमें 500 तक artisans हों, up to 500 artisans. And then there are major clusters which has 500 plus artisans. 500 से ज्यादा artisans अगर इकट्ठा हों एक जगह पे, so that is major cluster. That's how it is done. क्या करेंगे इनके लिए? So it supports through various interventions such as providing common infrastructure, new machinery, कुछ भी इनको चाहिए तो वो क्लस्टर में प्रोवाइड कर देते हैं. Then creating raw material banks. Let's say कोई खादी बना रहा है तो उसके लिए रॉ मटेरियल तो चाहिए. Then improved packaging skills and capacity development.
So this was the news, that's why we wrote. Otherwise, the schemes तो बहुत सारी हैं. Then there is something called as Aspire scheme. ASPIRE, Aspire. So this is for promoting innovation, rural industry and entrepreneurship. A scheme for promoting innovation, rural industry and entrepreneurship. तो ये आपके जो मैंने आपको नोट्स दिए ना स्कीम वाले, उसके अंदर है, तो उसी में से पढ़ लो, ज्यादा बेटर है. ठीक है, जस्ट टेक केयर. दैट इज एस्पायर स्कीम. करता क्या है? प्रमोट इनोवेशन एंड रूरल एंटरप्रेन्योरशिप थ्रू रूरल लाइवलीहुड बिजनेस इंक्यूबेटर्स, टेक्नोलॉजी बिजनेस इंक्यूबेटर्स एंड फंड फॉर स्टार्टअप क्रिएशन इन एग्रो बिजनेस और एग्रो बेस्ड इंडस्ट्री. ठीक है, तो दैट इज हैपनिंग देयर इन स्कीम ऑफ स्कीम्स. दिस इज एमएसएमई सेक्टर. That's what the government is trying to do. Okay. एक पीएम गति शक्ति प्रोग्राम शुरू किया गया था पिछले साल बजट के अंदर. अब उसी प्रोग्राम के अंदर क्या इंप्रूवमेंट्स हुई हैं उसको पता करने का एक तरीका होता है. देयर इज समथिंग कॉल्ड एज लीड्स रिपोर्ट. ओके, सो नेक्स्ट इज लीड्स रिपोर्ट, LEADS, लीड्स रिपोर्ट 2022 that has just come in. So what is this about? So देखिए, logistics ease across different states. Logistics ease across different states. That's the concern of this report. Okay. Now this is released by Ministry of Commerce and Industry. हर साल Ministry of Commerce and Industry इसको रिलीज करता है. आपको पहले तो यही क्वेश्चन बन सकता है, वो पूछेंगे कि ये नीति आयोग के द्वारा है, किसके द्वारा है, like this. So it is by Ministry of Commerce and Industry. What does it do? So it is basically इंडिया का लॉजिस्टिक्स परफॉर्मेंस इंडेक्स है खुद का. अदरवाइज लॉजिस्टिक्स परफॉर्मेंस इंडेक्स कौन देता है? World Bank. श्योर? बड़ी जल्दी आंसर आया. Yes. Yes, sir. वर्ल्ड बैंक देता है. तो ये हमारा इंडिया का खुद का लॉजिस्टिक्स परफॉर्मेंस इंडेक्स है, लीड्स रिपोर्ट. ठीक है, क्योंकि लॉजिस्टिक परफॉर्मेंस इंडेक्स, हम जब भी कोई बाहर से कोई इंडेक्स आता है ये बोलते हैं कि ये अच्छा नहीं है अगर हमारी रैंकिंग ठीक ना हो तो ये किसके ऊपर बेस्ड है? देयर आर 4 categories in which the leads report classifies the entire data. तो कोस्टल स्टेट्स लिख लीजिए, कैटेगरीज क्या है इसके अंदर. फर्स्ट इज कोस्टल स्टेट्स, सेकंड इज हिंटरलैंड या लैंडलॉक्ड स्टेट्स, थर्ड इज नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स एंड फोर्थ इज यूनियन टेरिटरीज. ओके, इसमें लिखिए लीड्स 2022 रिपोर्ट would assist the PM Gati Shakti National Master Plan and the National Logistics Policy. ये भी नई लॉन्च हुई है 2022 में. And the National Logistics Policy. According to the report, there are 3 categories of states. एक है अचीवर्स, एक है फास्ट मूवर्स और एक है एस्पायरर्स. जिनके अंदर तो लॉजिस्टिक्स बढ़िया है उनको बोलते हैं अचीवर्स. तो महाराष्ट्र उसमें टॉप है. फर्स्ट इज अचीवर्स. तो वेयर परफॉर्मेंस इज more than 90%. So here Maharashtra is the top. बहुत सारे हैं, महाराष्ट्र टॉप. दूसरा है फास्ट मूवर्स. So here the performance is 80 to 90%. So here Kerala is at the top. And then there are aspirers. Performance is below 80%. Okay. Now, what is this PM Gati Shakti? ये भी अपने आप में बहुत न्यूज में रहा इस बार.
PM Gati Shakti. In fact, even in this budget, they talked about PM Gati Shakti. Okay. So हमारे इंडिया में ना एक नेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर पाइपलाइन प्रोजेक्ट लॉन्च हुआ था, नेशनल इंफ्रा पाइपलाइन 2019 के अंदर। पाइपलाइन इन 2019, इसमें बेसिक कंसिडरेशन ये थी कि इंफ्रास्ट्रक्चर को बूस्ट करने के लिए वी विल बी मोबिलाइजिंग सम 110 लाख करोड़ रुपीस। ओके, and now this national infrastructure pipeline has been subsumed under the PM Gati Shakti only. Okay, so देखिए, the national infrastructure pipeline 2019 will be subsumed under PM Gati Shakti scheme. Will be subsumed under PM Gati Shakti scheme. तो ये 110 लाख करोड़ रुपीस की इन्वेस्टमेंट करनी थी। ओके, देन आगे देखिए, the scheme aims at integrated planning and implementation of infrastructure projects. Integrated planning and implementation of infrastructure projects from 2021 to 25. ये है इसका प्लान पीरियड। इंटीग्रेटिंग, इम्प्लीमेंटिंग, इंटीग्रेटेड प्लानिंग कि जब प्लान करेंगे रेलवे लाइन, सड़क, ये सब तो इकट्ठा करेंगे, एंड इम्प्लीमेंटेशन ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स। क्या होता है ना, कभी सड़क बन रही है, जमीन अधिग्रहण की प्रॉब्लम हो गई, कभी रेलवे लाइन के ऊपर से ब्रिज जा रहा है, आधा बन गया, रेलवेज वालों ने उसको कंप्लीट नहीं किया, ये सारी जो सिचुएशंस हैं इससे बाहर निकलना। सो दैट इज द इंटीग्रेटेड प्लानिंग एंड इम्प्लीमेंटेशन ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स, ये करना। पहले अलग अलग मिनिस्ट्रीज, डिपार्टमेंट्स अपना अपना काम करते थे, अब वो नहीं होगा। बेसिकली कंसर्न इतना ही, ठीक है। सो दैट इज द कोर ऑफ इट, जो पीएम गति शक्ति के अंदर डेवलपमेंट है। ओके, आगे लिखिए। It will provide the national master plan for multimodal connectivity. National master plan for multimodal connectivity. Multimodal कहने का मतलब होता है एयर, वाटर, रोड, रेलवे, सारा कुछ इकट्ठा, ठीक है। तो दैट्स दैट। अब मल्टी मोडल कनेक्टिविटी की बात आई ही है तो इंडिया में ना इसके लिए एक एक्ट भी है। सो दैट इज कॉल्ड एज मल्टी मोडल ट्रांसपोर्ट ऑफ गुड्स एक्ट 1993, MMTG। तो पेपर में ना यूपीएससी में आपको बड़ा सिंपल क्वेश्चन डालेंगे कि मल्टी मोडल ट्रांसपोर्टेशन को रेगुलेट करने के लिए क्या इंडिया में कोई एक्ट है या नहीं है। तो देयर इज एन एक्ट ऑफ 1993 व्हिच रेगुलेट्स इट, ठीक है। And this will work alongside the various policies that we are considering. So जैसे national logistics के लिए एक policy आया lately by Ministry of Commerce and Industry. So that was a news. Okay. So okay. So it is multimodal transportation of Goods Act 1993. So this act was replaced with National Logistics Efficiency. Was replaced with National Logistics Efficiency and Advancement Predictability and Safety Act in 2020. इस वजह से भी ये न्यूज में था, ठीक है। तो पीएम गति शक्ति आने से पहले ये होके हटा है। इंडिया में प्रॉब्लम क्या है कि हमारी कोई भी चीज हम मार्केट में खरीदते हैं उसका करीब 14-15% हिस्सा जो है दैट इज द लॉजिस्टिक्स कॉस्ट। वर्ल्ड ओवर ये 5 to 7% है। So we need to cut down the logistics costs. Okay. Okay. Now let's look at public sector enterprises for a while before finishing today's discussion. So public sector enterprises में आपको मालूम है there are Maharatna, Navratna, Mini Ratna type of status which are going on. है ना, सुना हुआ ना। तो महारत्ना स्टेटस किसको देते हैं? Any idea?
who is given Maharatna status? तो इसमें कुछ ऐसा है कि आपके पास मोर देन ₹5,000 करोड़ का नेट प्रॉफिट होना चाहिए पिछले 3 साल में लगातार। तो 3-year consecutive net profit of greater than 5,000 करोड़ रुपीस ये होना चाहिए। दूसरा, एनुअल टर्नओवर ऑफ 25,000 करोड़ रुपीस, ये 3-year कंसेक्टिव भी चलेगा। ये भी एनुअल टर्नओवर मतलब पिछले 3 साल से लगातार it is more than 25,000 crore rupees. That's the second condition. Then third condition is should have average annual net worth of 15,000 crore rupees. Average annual net worth greater than 15,000 crore rupees. इन तीनों में से कोई भी एक कंडीशन अगर कोई एक पर्टिकुलर पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइज मीट करता है तो उसको महारत्ना स्टेटस दिया जाता है। रिसेंटली इन सितंबर 2022 there is Rural Electrification Corporation of India which received this Maharatna status. So September 2022 एक और कंपनी है जिसको ये मिला REC, Rural Electrification Corporation, which received this Maharatna status. Okay. तो REC है क्या? इट इज एन NBFC, नॉन बैंकिंग फाइनेंस कंपनी है। NBFC which was established in 1969. तो पावर सेक्टर में फाइनेंस और डेवलपमेंट के लिए है। तो फोकस इज पावर सेक्टर फाइनेंस एंड डेवलपमेंट। फाइनेंस एंड डेवलपमेंट, so that is the consideration point for this particular company. It comes under the purview of Ministry of Power. Okay. And ये बहुत सारी इंडिया में जो फ्लैगशिप स्कीम्स हैं उसके लिए नोडल एजेंसी भी है। देख लीजिए, इस वजह से न्यूज में था, नोडल एजेंसी फॉर फॉलोइंग स्कीम्स। कौन कौन सी स्कीम्स के लिए नोडल एजेंसी है? तो प्रधानमंत्री, मिनिस्ट्री ऑफ पावर, उसके अधीन काम करता है मिनिस्ट्री ऑफ पावर के। तो 3-4 स्कीम्स हैं जो ये लगाता है, ये वाली स्कीम्स है। प्रधानमंत्री सहज बिजली हर घर योजना, फर्स्ट वन। दूसरा है दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण ज्योति योजना, और तीसरा है नेशनल इलेक्ट्रिसिटी फंड। ओके, इसके अलावा ये तो नोडल एजेंसी है इनके लिए, तो मतलब सिर्फ एक ही ये काम करेगा। इसके अलावा एक और स्कीम है जिसमें मिनिस्ट्री ऑफ पावर को हेल्प करता है, मतलब डायरेक्टली नोडल एजेंसी मिनिस्ट्री ऑफ पावर है, ये उसको हेल्प करता है। दैट इज उज्जवल डिस्कॉम अश्योरेंस योजना, उदय स्कीम। तो वहां पे इट इज नॉट नोडल बट हेल्प्स। यूपीएससी इस चीज में भी इंटरेस्टेड होता है कि इसकी नोडल एजेंसी कौन है। ठीक है, तो उज्जवल डिस्कॉम अश्योरेंस योजना मिनिस्ट्री ऑफ पावर नोडल एजेंसी है, उसको ये हेल्प करता है, असिस्ट करता है। तो दैट्स द महारत्ना स्टेटस। अभी जो महारत्ना स्टेटस है वो कितनी कंपनीज के पास है? हेलो हेलो, हाउ मेनी पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस हैव द महारत्ना स्टेटस इन इंडिया राइट नाउ? Sir, I think it's 27. No. It is going to be ये वाला 10वां था, इसके बाद एक और को मिला है, दैट इज पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन, 11th टोटल। ठीक है, तो अक्टूबर 2022 में एक और कंपनी है दैट इज कॉल्ड पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन, PFC। ठीक है, so it has also got this Maharatna status. This one comes under Department of Public Enterprise and it's under Ministry of Finance. So under Department of Public Sector Enterprises under Ministry of Finance, ये वहां पे काम करती है, पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन। ठीक है,
So लिख लीजिए it is the 11th public sector enterprise to get Maharatna status. 11th PSC to get Maharatna status. इसके अलावा और कौन कौन से हैं? जैसे ONGC है, से पहले भारत हैवी इलेक्ट्रिकल लिमिटेड है, हाँ सेल है, स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड, गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड है, गेल, NTPC है, नेशनल थर्मल पावर कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, IOC है, इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन, और कौन सा आ गया, भेल है, भारत हैवी, ओ लिख लिया तो 1 2 3 4 5 6 तो यही हो गए, 3 और बचे 2 बोर्ड पे। ठीक है, तो 2-3 और होंगे, तो वो भी इसी कैटेगरी में बिलोंग करते हैं। कोल इंडिया लिमिटेड भी तो है, हाँ CIL, कोल इंडिया लिमिटेड, दैट्स आल्सो देयर। BPCL भी है, भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड, एक रह गया। हाँ भी याद आ रहा है किसी को? HPCL, हाँ HPCL, हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन, बस दैट्स इट। ये टोटल लिस्ट है। अब हमारे पास 11 की 11 महारत्ना हैं, तो ये अपने पास लिख लेना, क्योंकि UPSC पूछ सकता है विच ऑफ द फॉलोइंग हैव महारत्ना स्टेटस, एक ये क्वेश्चन भी तो आ ही सकता है। महारत्ना स्टेटस के लिए जो पैरामीटर्स हैं वो क्या हैं, ये लिख लिया, लिस्ट बन गई? चलो yes sir. ठीक है, तो 2022 में 2 को मिला है, एक REC एक PFC। व्हाट इज द सिचुएशन विद फिर 12 हो गए, महारत्ना स्टेटस? 12 हो गए, फिर 11 होने चाहिए। तो 10 तो फिर एक मिनट। Okay, so this is the criteria for Maharatna. So this image I'll share with you. जो पहले से ही नवरत्ना हो, ठीक है, it should be listed on stock exchange with minimum prescribed public holding under Securities and Exchange Board of India. This is actually now it has increased to 25%. 2017 से पहले ये 10% होता था, ठीक है। फिर बाद में पब्लिक सेक्टर इंटरप्राइजेस के लिए ये रूल हटा दिया गया, प्राइवेट सेक्टर कंपनीज के लिए आज भी 25% है। एवरेज एनुअल टर्नओवर ये हमने सब देख ही लिया, एंड शुड हैव अ ग्लोबल प्रेजेंस, इंटरनेशनल प्रेजेंस, दैट इज फॉर महारत्ना। ऐसे ही नवरत्ना और मिनी रत्ना का भी। मिनी रत्ना में 2 कैटेगरीज आते हैं, 1 and 2, सो दिस आई विल शेयर विद यू, डोंट वरी, ठीक है। अच्छा, इसके अलावा हैव यू हर्ड ऑफ द टर्म मूनलाइटिंग? ये न्यूज में आ रहा था, मूनलाइटिंग कल्चर। Yes, sir. क्या होता है Yes, मूनलाइटिंग sir. कल्चर? Sir, when you take up additional jobs illegally. हाँ, इलीगली, बिना अपनी कंपनी वालों तो को बताए विप्रो रात को कहीं और काम कर रहे हो, तो दैट इज कॉल्ड मूनलाइटिंग। यस सर, वो विप्रो वाला केस। हाँ, so that came into news. So moonlighting has been in news recently. तो UPSC का एक ये भी होता है, so लिख लीजिए क्या होता है moonlighting. So it is a practice of taking up secondary jobs after regular work hours. Taking up secondary jobs after regular work hours. So that is moonlighting. ठीक है, ओके। फिर जो इंडस्ट्रियल सेक्टर है इंडिया का, उसका एक बार थोड़ा सा ओवरव्यू ले लेते हैं। सो हम कह रहे हैं ना कि हमें $5 ट्रिलियन इकोनॉमी चाहिए, उसको लेके इंडस्ट्रियल सेक्टर का एक व्यू पॉइंट है। तो लिखिए, गिव अ हेडिंग, इंडस्ट्रियल सेक्टर। ये एक रिसेंट रिपोर्ट पब्लिश हुआ था, उसके अकॉर्डिंगली न्यूज़पेपर में। तो इंडस्ट्रियल सेक्टर व्यू पॉइंट, let me share you with you an image also that will help us take the overview. Not this one. Right? Sometimes the internet fails you. Now it should work at least. Not able to show you. चलिए, कोशिश करूंगा बाद में लाने की। तो इसके बारे में आप लिखना शुरू कीजिए।
according to the recent statistics by Ministry of Industries and Commerce, according to the recent statistics by Ministry of Industries and Commerce, Industry 4.0, Industry 4.0 is fast approaching, in financial year 2021-22, in financial year 2021-22, there was a 50% increase in new business registration, 50% increase in new business registration in the manufacturing sector over the year 2020. Okay. Then within this, electronic vehicles, EVs, electronic vehicles, and solar panel production account for 80% of total manufacturing expenditure. 80% of total manufacturing expenditure. तो ये दो सेक्टर्स हैं जिन्होंने बहुत ज्यादा लीड किया है, ये अपने आप में न्यूज मेकिंग था. With semiconductor chain or chip manufacturing accounting for 50% of total expenditure, 50% of total expenditure in 2022. ये 2021 का है, ये 2022 का है. So that's how it has moved financial years के तौर पे. So this is what was the news. तो बहुत ज्यादा फोकस अब किस इंडस्ट्री पे, सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री के ऊपर. फिर एक बजट के अंदर भी हमें सुनने को मिला और इंडस्ट्री वो है गिफ्ट सिटी. हर्ड ऑफ दिस? गिफ्ट सिटी कहाँ पे है? गिफ्ट सिटी गुजरात में, अहमदनगर के आसपास है. So it is like the global international financial hub that we are trying to create in Gift City. So like the Gujarat International Finance Tech City. That is the full form, Gift City. Gujarat International Finance Tech City is located in Gandhinagar, Gujarat. Gandhinagar, Gujarat. Okay. It consists of multiple or multi-service special economic zone. Consists of a multi-service special economic zone (SEZ), which houses India's first international financial services center. International Financial Services Center and an exclusive domestic tariff area. It provides integrated hub for financial and technology services. It provides an integrated hub for financial and technology services. Not just for India, but for the world. Not just for India, but for the world. Then in July 2022, the Prime Minister has laid the foundation of International Financial Services Center Authority. ये नया बनाया है Authority in Gift City, Gandhinagar. International Financial Services Center Authority in Gift City, Gandhinagar.
which was created on the basis of IFSC Act 2019. एक एक्ट बनाया गया था 2019 में, उसके बेसिस पे which will regulate all financial services in the IFSC. Which will regulate all the financial services in the IFSC. सबसे पहले SCZ एक्ट के अंदर IFSC डिफाइन किया गया था 2005 में. इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विसेज सेंटर की जो बेसिस है वो वहां से आती है, लेकिन हमने कभी बनाया नहीं. तो बना ये लेटर ऑन, ठीक है, IFSC गिफ्ट सिटी. तो पहली बार ये एक्सपेरिमेंटेशन किया गया था और इसकी रेगुलेशन मल्टीपल रेगुलेटर्स के पास रही है अभी भी. तो करंटली RBI, SEBI एंड IRDAI, RBI Reserve Bank of India, SEBI and IRDAI, SEBI and Insurance Regulatory and Development Authority of India, IRDAI, regulate the banking, capital market and insurance sectors in IFSC respectively. अपने अपने सेक्टर्स को वहां पे रिस्पेक्टिवली हर कोई रेगुलेट कर रहा है. बैंकिंग, कैपिटल मार्केट एंड इंश्योरेंस सेक्टर्स इन IFSC respectively. But it requires higher degree of inter-regulatory coordination. सबको आपस में मिलकर काम करना पड़ेगा. Therefore, The higher degree of inter-regulatory coordination. Inter-regulatory coordination. ये सारे रेगुलेटर्स को आपस में मिलकर काम करना पड़ता था. Therefore, IFSC-A जो बनाया गया है was formed with following composition. तो कौन कौन है IFSC-A के अंदर की composition है? Visible? First is there should be a chairperson, one member each. देख लीजिए. First is chairperson, then one member each to be nominated by RBI, SEBI, IRDA and PFRDA. सब में से एक एक आ गया हर सेक्टर का. ठीक है. 2 members to be nominated by central government and 2 other full-time members or part-time members. So it is 1 plus 4 plus 2 plus 2. कितने members हो गए? 2, 4, 8, 1, 9. That is IFSC. तो हमारे सारी एक तरह से रेगुलेटर्स वहां पे प्रेजेंट है. ठीक है. पावर्स क्या है? बेसिकली फाइनेंशियल सेक्टर की रेगुलेशन करनी है. सारे मेंबर्स हैं तो सबकी पावर्स हैं और सबके लिए अथॉरिटी अब सोली एक्सरसाइज करेगा IFSC. नहीं तो इनको आपस में मिलजुल के ऐसे काम करना पड़ता था. दैट वुड क्रिएट मेजर ट्रबल, क्योंकि वहां पे हर तरह की चीजें होनी है. हर तरह के प्रोडक्ट्स के बारे में बात किया जाएगा जो इंटरनेशनली अवेलेबल है. तो IFSC is like this. A lot of things about its working is yet come into existence. क्या क्या होता है वहां पे, क्या क्या नहीं होता, जो लोग जाएंगे उनको पता करना है. हमें बहुत ज्यादा टेंशन नहीं लेनी. हमें अगर कोई पॉलिसी लेवल पे कोई मूवमेंट होता है तो उसके बारे में पता होनी चाहिए. ठीक है. तो ये 2020 में एस्टैब्लिश कर लिया गया था IFSC. काम ये क्या करेगा? सारी फाइनेंशियल सर्विसेज प्रोडक्ट्स और इंस्टीट्यूशंस को वहां पे रेगुलेट करेगा, जितने भी. ठीक है. तो दैट इज आवर मेन कंसिडरेशन है IFSC. क्लियर हो गया? गिफ्ट सिटी. अब लेटली वहां पे एक बुलियन एक्सचेंज भी लॉन्च हुआ है. लिखिए नेक्स्ट. इन जुलाई 2022 प्राइम मिनिस्टर हैज लॉन्च्ड इंडिया इंटरनेशनल बुलियन एक्सचेंज, IIBX, इंडिया इंटरनेशनल बुलियन एक्सचेंज एट गिफ्ट सिटी. ये इंडिया का पहला बुलियन एक्सचेंज है, गिफ्ट सिटी.
which is called as ये नेशनल स्टॉक एक्सचेंज के साथ मिलके किया गया है, तो इसका नाम जो है वो देख लीजिए, अब हो सकता है आपको सीधा ही पूछें इसी तरह से. इट इज कॉल्ड NSE IFSC SGX Connect. NSE National Stock Exchange hyphen IFSC, that is International Financial Services Center. Then there is SGS, that is Standard Gold Exchange Connect. तो इस तरह से इसका नाम रखा गया. ठीक है, तो NSE IFSC SGX Connect. SGX is Singapore Exchange Limited. Okay? Singapore Exchange Limited. तो यहाँ पे गोल्ड बुलियन और जो भी है उसकी एक्सचेंज की जा सकती है. So that got established there. So far so good? Yes, sir. Okay. इसके बाद अलग अलग इंडस्ट्रीज हैं, फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री, स्टील इंडस्ट्री, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, उनके करंट अफेयर हैं. सेमीकंडक्टर के लिए वर्कआउट है, तो वो थोड़ा सा वर्कआउट करना है हमने. तो लेट्स फर्स्ट स्टार्ट विद द इंडिया सेमीकंडक्टर मिशन. इंडिया सेमीकंडक्टर मिशन, क्योंकि ये हमारा आज की डेट में सबसे ज्यादा एक्सपेंडिचर जो है वो सेमीकंडक्टर्स को लेके हो रहा है. So that's why that should be an important thing for UPSC to consider. India Semiconductor Mission. ਸਰ हाँ जी. ਸਰ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਮੁਹਾਲੀ ਸੈਮੀਕੰਡਕਟਰ ਲੈਬੋਰਟਰੀ ਹੈ ਇੰਡਸਟਰੀ ਬੰਦ ਸੀ, ਹੋ ਗਈ ਮੈਂ ਨਾ ਹੁਣ ਤਾਂ. ਟ੍ਰਿਬਿਊਨ ਚ ਆਰਟੀਕਲ ਪੜ੍ਹਿਆ ਸੀ 3-4 ਮੰਥ ਪਹਿਲਾਂ हाँ हाँ, कि ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਉਹਨੂੰ resurrect ਕਰਾਂਗੇ, ਰੀਜਨਰੇਟ ਦੁਬਾਰਾ ਕਰਨ ਲਈ. ਬਣਾਵਾਂਗੇ. ਹਾਂਜੀ ਦੁਬਾਰਾ ਫੰਡ ਬਣਾਉਣਾ, ਉਹਨੂੰ ਇਕੱਠੇ ਕਾਫੀ ਕਰਾਂਗੇ. ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ 1980 85 ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਦੋਂ. ਉਹ ਟੈਰਰਿਜ਼ਮ ਵੇਲੇ ਬੰਦ ਕਰਤੀ ਸੀ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੁਬਾਰਾ ਚਲਾਈ. ਅੱਛਾ हाँ. Okay. So लिखिए ISM India Semiconductor Mission. So this was launched in 2021. Basically chip shortage के चलते 2021 में लॉन्च किया गया था. With an outlay of 76,000 crore rupees. An outlay of 76,000 crore rupees under the Ministry of Electronics and Information Technology. Under the Ministry of Electronics and Information Technology, MeitY. For development of sustainable semiconductor and display ecosystem. For development of sustainable semiconductor and display, तो आप जैसे फोन पे टीवी पे डिस्प्लेज लगते हैं, तो डिस्प्ले इकोसिस्टम. Okay. In which the government would provide fiscal support of 30%. Fiscal support of 30% of capital expenditure to eligible applicants and design linked incentive scheme. तो बेसिकली ये इंटीग्रेटेड सर्किट्स या चिपसेट्स, इनको डिजाइन करने के लिए फाइनेंशियल इंसेंटिव्स दे सकती है एंड डिजाइन इंफ्रास्ट्रक्चर सपोर्ट कर सकती है. तो इसके अंदर लिख लीजिए बाय प्रोवाइडिंग फाइनेंशियल इंसेंटिव्स एंड डिजाइन इंफ्रास्ट्रक्चर सपोर्ट फॉर चिप मेकिंग. Financial incentives and design infrastructure support for chip making. Okay. Presently हमारी जो सेमीकंडक्टर्स की कंजम्पशन है ना, वो करीब 80 बिलियन US डॉलर्स की कंजम्पशन है. मतलब हम ये सारे इंपोर्ट ही करते हैं आज की डेट में. और बाय 2030 दिस विल क्रॉस $100 बिलियन. ठीक है. फिलहाल ये मार्केट डोमिनेट की जाती है बाय USA एंड ताइवान. ये दो मेजर कंट्रीज हैं जो इसको डोमिनेट करते हैं, और जर्मनी अभी शुरू कर रहा है इमर्जिंग प्रोड्यूसर. ठीक है. US और ताइवान ये दो मेजर कंपनी है. So that's that for chip making industry. Pharmaceutical के अंदर कुछ ना कुछ चलता रहता है, फार्मा एंड के अपग्रेडेशन एंड ऑल दैट. बट
आमतौर पे वहां पे एक चीज जो सबसे ज्यादा न्यूज में रही फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में, दैट इज API. So that is called active pharmaceutical ingredient. API, active pharmaceutical ingredient. बेसिकली जब तुम कोई भी मेडिसिन खरीदते हो तो उसमें मेडिसिन की क्वांटिटी कम होती है, परसेंटेज mg mmg ऐसा कुछ लिखा होगा, बाकी सारा तो नॉर्मल पाउडर है, चॉक पाउडर है, ठीक है, या जेलेटिन है या कुछ भी। तो जो एक्चुअल में मेडिसिन है दैट इज कॉल्ड एपीआई। इंडिया में एपीआई जो है दिस इज 60% इंपोर्टेड फ्रॉम चाइना, ओके, एंड that's why we have a dependency, and this is basically used in even the generic pharmacy which we are forming in India. India is called the pharmacy of the world. तो हमारी जितनी भी जेनरिक फार्मेसी मतलब नॉन ब्रांडेड मेडिसिन हम बनाते हैं जो साउथ अफ्रीका अफ्रीका इधर उधर जाती है, तो वो इन्हीं को यूज करके बनते हैं। इसलिए अब आत्मनिर्भर भारत प्रोग्राम के अंदर इसको भी बोला गया कि भाई इंप्रूव कीजिए, तो बल्क ड्रग पार्क स्कीम्स इसके लिए लॉन्च हुई। तो लिखिए, द गवर्नमेंट aims to develop 3 mega bulk drug parks in partnership with states to provide affordable medicine to citizens. Second, it has come up with assistance to pharma industry API for common facilities scheme. Assistance to pharma industry for common facility scheme. इसमें क्या करेंगे, देखिए, in which 70% of the approved project cost और up to ₹20 crore, मतलब मैक्सिमम ये 20 करोड़ रखा गया पर प्रोजेक्ट के लिए, will be given as grant in aid for pharmaceutical clusters. तो 20 करोड़ तक की ग्रांट इन एड गवर्नमेंट देगी कहीं पे भी फार्मास्यूटिकल क्लस्टर आपके स्टेट में डेवलप करना चाहते हो। जैसे हिमाचल में बद्दी के अंदर है, तो उसमें सरकार ने पार्क्स बनवा दिए, सड़कें बनवा दी, लाइट पानी सब चीजों की व्यवस्था कर दी, दैट हैपेंस। देन नेक्स्ट वन, फार्मास्यूटिकल टेक्नोलॉजी अपग्रेडेशन असिस्टेंस स्कीम, PTUAS, Pharmaceutical Technology Upgradation Assistance Scheme, where the government is providing a capital subsidy on loans, 10% capital subsidy देंगे, लिखिए 10% capital subsidy on loans up to a maximum limit of rupees 10 crore. With a 3-year interest subvention. तो 3 साल का लोन लेते हो तो 5% इंटरेस्ट सबवेंशन, 3-year interest subvention of up to 5%, ब्रैकेट में लिखिए 6% फॉर SC/ST, 1% SC/ST के लिए ज्यादा है, 6% फॉर SC/ST। तो बहुत ज्यादा टेंशन लेके इसमें फायदा नहीं है, इतने से करंट अफेयर्स यहाँ पे बहुत है इंडस्ट्रियल सेक्टर के लिए, ठीक है। तो इसके अलावा लेकिन इसके जो बेसिक एस्पेक्ट्स हैं उन पे जरूर ध्यान देना, तो दैट आई विल शेयर विद यू, डू स्टडी इट एटलीस्ट वंस, गो थ्रू इट, अगर कोई डाउट आता है तो प्लीज पूछना भी, ठीक है। तो अब हमारा जो मेजर कंसर्न रह गया है इसमें से, दैट इज इंफ्रास्ट्रक्चर एंड एक्सटर्नल सेक्टर, ये 2 टॉपिक्स हैं इंडियन इकोनॉमी के अंदर, दैट विल फिनिश आवर इकोनॉमी। इंफ्रास्ट्रक्चर के अंदर जो बेसिक्स हैं वो इसी PDF के अंदर आपको मिल जाएंगे, जो इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ रिलेटेड करंट अफेयर्स हैं वो हम नेक्स्ट क्लास में वर्कआउट करेंगे,
apart from that, we'll be working on external sector also. Okay, so thank you, take care. तो इसको ध्यान से पढ़ लेना और अगर कोई डाउट्स होंगे तो पूछना है, ठीक है? ओके।